ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स। तो सेक्शन 128 क्लॉज 1 के कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 128 क्लॉज 1 के हिसाब से एवरी कंपनी को जो है प्रिपेयर करना है और रखना है रजिस्टर्ड ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रिलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर जो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी including that of its branch office, and if any, explain करो transactions affected both at the registered office and its branches, and such book shall be kept on accrual basis. उन books को accrual basis पे रखना और according to the double entry system of accounting. तो as per section 128 clause 1 of the Companies Act, every company shall prepare and keep at its register office book of accounts and other relevant books and papers and financial statements for every financial year which give a true and fair view of the state of affairs of the company, include karo that of its branch office or offices, if any, explain the transaction affected both at register of it and branches, or such book shall be kept on accrual basis or double entry system of accounting के हिसाब से. अब it may be noted that all or any of the books of accounts aforesaid and the other relevant papers may be kept at such other place in India as the board of directors may decide. Where such a decision is taken, the company shall within 7 days file with the registrar notice in writing giving the full address of that other place. तो अगर हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और रखना चाहते हैं तो हम इंडिया में ही रख सकते हैं पहला तो कोई भी प्लेस, तो एनी प्लेस अदर प्लेस इन इंडिया। बट हम बोर्ड ऑफ जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे डिसीजन लेंगे, लेकिन कंपनी को 7 दिन के अंदर फाइल करना है विद रजिस्टर एक नोटिस राइटिंग में फुल एड्रेस बताते हुए उस अदर प्लेस का। कंपनी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रिक फॉर्म में या अदर रिलेवेंट पेपर्स इलेक्ट्रिक मोड कैसे भी रख सकते हैं। फिर सब सेक्शन 2 प्रोवाइड सेक्शन 128 सब सेक्शन 1 तो हो गया। अब सब सेक्शन 2 जो है वो प्रोवाइड करता है दैट वेयर कंपनी एज अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, कंपनी का ब्रांच ऑफिस इंडिया में या आउटसाइड इंडिया है तो इट शेल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ सच सेक्शन इफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन अफेक्टेड एट द ब्रांच ऑफिस आर केप्ट एट द ऑफिस एंड प्रॉपर समराइज्ड रिटर्न्स जो है इफ periodically sent किए जाते हैं by the branch office to the company at its register office or other place. फिर सबसेक्शन 8 143 कंपनी प्रिस्क्राइब करता है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंपनीज ऑडिटर विद रेफरेंस टू द ऑडिट ऑफ ब्रांच एंड ब्रांच ऑडिटर वेयर अ कंपनी एज अ ब्रांच ऑफिस द अकाउंट्स ऑफ दैट ऑफिस शेल बी ऑडिटेड either by the auditor appointed by the company under this act or by any other person qualified for appointment as auditor of the company, या द ऑडिटर या फिर एनी अदर पर्सन जो क्वालिफाइड है फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी अंडर दिस एक्ट और एंड appointed as such under section 139 or where the branch office is situated in a country outside India, the accounts of branch office shall be audited either by the company's auditor or by an accountant or by any other person duly qualified to act as an auditor of the accounts of the branch office in accordance with the laws of that country and the duties and powers of the companies. It may be noted that the branch auditor shall prepare a report. Branch auditor को report prepare करनी है on the accounts of the branch examined by him and send it to the auditor of the company who shall deal with it in his report in such a manner as he considers necessary. Further, as per Rule 12 of the Companies Act, Audit and Auditors Rules 2014, the branch auditor shall submit his report to the company auditor. कंपनी ऑडिटर को सबमिट करनी है, रिपोर्ट करना है फ्रॉड बाय द ऑडिटर शेल ऑल्सो एक्सटेंड टू दिस डेट। प्रिंसिपल ऑडिटर वो ऑडिटर है जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एंटिटी एंड द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर कंपोनेंट्स ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। अदर ऑडिटर वो है जो अदर देन प्रिंसिपल ऑडिटर है रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल बाय प्रिंसिपल ऑडिटर। कंपोनेंट एक डिवीजन है, ब्रांच है, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएटेड एंटरप्राइज या अदर एंटिटी जिसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑडिटर द प्रिंसिपल ऑडिटर। नाउ
using the work of another auditor. When the accounts of the branch are audited by a person other than the company's auditor or principal auditor, there is a need for a clear understanding of the role of such auditor and the company's auditor in relation to the audit of the accounts of the branch and the audit of a company as a whole. Also, there is a great necessity for a proper rapport between these two auditors for the purpose of an effective audit. In recognition of the needs, the Council of the ICI has dealt with the issues in SA 600 using the work of another auditor. So it makes clear that in certain situations, the statute governing the entity may confer a right on the principal auditor to visit a component and examine the books of accounts and other records of the said component if he thinks it is necessary to do so. Where another auditor has been appointed for the component, the principal auditor would normally be entitled to rely upon the work of such auditor unless there are special circumstances to make it essential for him to visit the component or to examine the books of accounts and other records of the said component. Further, it requires that the principal auditor should perform procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence that the work of the other auditor is adequate for the principal auditor's purpose in the context of such assignment. प्रिंसिपल ऑडिटर को ऑर्डिनरी परफॉर्म करना है, एडवाइस करना है अदर ऑडिटर को दैट इट इज टू बी मेड ऑफ द अदर ऑडिटर्स वर्क एंड रिपोर्ट एंड मेक sufficient arrangements for coordination of their efforts at the planning stage of the audit, and the principal auditor would inform the other auditors of matters such as requiring special consideration procedures for the identification significant accounting auditing reporting रिक्वायरमेंट्स और को लेके भी एडवाइस करेगा अदर ऑडिटर को, ऑब्टेन करेगा रिप्रेजेंटेशन एज टू कंप्लाइंस विद देम. To advise the auditor of the use that is made to be for made to be made for the of the other auditor's work and report करना and make करना sufficient arrangements for coordination of their efforts at the planning stage of the audit, or principal auditor inform करेगा other auditor matters such as requiring special consideration procedures for the identification of intercomponent transactions that may require disclosure and the timetable for completion of audit. Advice करना other auditor को of the significant accounting auditing and reporting requirements. Discuss करेगा other auditor से audit procedure applied, review करेगा written summary of the other auditor's procedures and findings which may be in the form of completed questionnaire or checklist. Principal auditor may also wish to visit the other auditor. The nature, timing, and extent of procedures will depend on the circumstances of the engagement and the principal auditor's knowledge of the professional competence of the other auditor. This knowledge may have been enhanced from the review of the previous audit and or previous audit work of the other auditor.